हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मिड टर्म पेपर्स नवंबर 2022 के, जो कि लेटेस्ट है। थर्ड सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स के हम देखेंगे। मॉर्निंग के पेपर्स मुझे फ़िलहाल नहीं मिले हैं, जो ही मिल जाते हैं मैं अपलोड करके आई लेट यू नो अबाउट देम। आफ्टरनून के डिस्कस कर लेते हैं। एंड पहला जो पेपर है हमारा एकेडमिक राइटिंग का। Question number 1. Answer the following questions. Part A. Make a horizontal outline for an essay on the topic co-education. और इसका part B है Write a 100-word introduction to the essay based on outline you prepared. So mostly past papers से इसी तरह हमारे टाइम से भी यही चलता आ रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। past papers आप देखा करें, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका पहला पार्ट जो है व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, और पार्ट बी जो है एनालाइज द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन द टॉपिक ऑफ डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग की जो करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो आपको इस टेक्स्ट या पैराग्राफ के अंदर नज़र आएंगे वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। एंड देन शॉर्ट फिक्शन का पेपर आ जाता है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 1. राइट अ नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट स्टोरी एज अ जॉनरा, और दूसरा है जी द नाइटिंगेल एंड द रोज एज अ फेरी टेल। एंड देन पार्ट 3 है जी थीम्स ऑफ गीडमपसा, द नेकलेस के अंदर जो थीम्स है वो आपने डिस्कस करने। एंड देन question number 2. Edgar Allan Poe's story is declare crime and horror in a very gothic yet composed manner. Critically analyze the Cask of Amontillado for its setting, action, and characterization to unfold horror and crime in the story. And then human right and citizenship. Question number 1. The last sermon of the Prophet, peace be upon him, so sincere and serene, yet so melodious and thought-provoking, and giving to mankind fundamental and guiding principles concerning the rights of humanity, whereby life at all levels could be reformed and set right at individual, collective, national, international, universal level for all time. Discuss. और क्वेश्चन 2 है जी द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑल राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजिबल, interdependent and interrelated. Vienna Declaration 1993 discussed the evolution of human rights with reference to first generation, second generation and third generation. Evolution of human rights basically discuss करने आपने। एंड देन क्लासिकल पोइट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। एंड सो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पार्ट ए है जी बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर लॉस पोजीशन ऑफ दैट। शेक्सपियर का जो था वहाँ से लिया गया है, राइट। एंड देन कह रहा है नॉर लूज पोजीशन ऑफ दैट फॉर दैट nor shall death brag thou wonder। शेक्सपियर का जो सोनेट है समर वाला, उसी से क्या ना एग्जैक्टली मुझे नहीं या इस टाइम पे नहीं आ रहा है, सो उससे रिलेटेड है। दूसरा जो है कह रहा है आई डेयर नॉट मूव माई डिम आइज एनी वे, डिस्पेयर बिहाइंड एंड डेथ बिफोर डॉट कास्ट सच टेरर एंड माई फेबल फ्लैश डॉट वेस्ट by sin is it which towards hell doth weigh। And then question number 2 है जी in John Donne's The Sun Rising, the speaker distinguishes love is unfamiliar with the breaks of time, and suggesting that love is everlasting and therefore not subject to the stars and stops of the hours, days, month, and other temporal units that govern the lives of everyone else. Similarly, शेक्सपियर के सोनेट 116 के अंदर let me not to the marriage of two minds, Shakespeare asserts that true love does not change as hours, weeks, and months. And then you have to analyze both of the mentioned poems in a comparative perspective.
लव एंड चेंज ये पास्ट पेपर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट होता आया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट, मोस्टली रिपीट होता है। सो ऑब्वियसली दोनों कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वही बात कहने की कोशिश करते हैं राइटर्स जॉन डन एंड शेक्सपियर, दैट लव इज़ एटर्नल, एटर्नल लव की बात करते हैं कि इट्स बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ टाइम, टाइम या सीजन्स या कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता एटर्नल लव को, जो कि एटर्नल रहती है। एंड शेक्सपियर ने कहा था कि जो है एटर्नल लव को उसने कैप्चर किया हुआ है, किस तरह इटर्नल बन गया है उसका लव, थ्रू हिज राइटिंग। आल्दो शेक्सपियर तो कब का हो गुजरा है, स्टिल हिज राइटिंग, उसकी लवर स्टिल जिंदा है, हम पढ़ते हैं उसकी राइटिंग और उसके राइटिंग उसके पोइम्स के अंदर, राइट, ये कॉन्सेप्ट है। एंड देन इस्लामिक स्टडीज attempt all the question number 1, answer the following questions, define the Holy Quran and Hadith Qudsi, write various names of the Holy Quran with its meaning, write both opinion for the definition of Makkah and Medina, write the 5 characteristics of Makki Surah, what is meant by cause of revelation. Question number 3, write a comprehensive note on the compilation of Holy Quran in oral and written form at the time of Prophet peace be upon him. अभी मिड मॉर्निंग के पेपर डिस्कस कर लेते हैं। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का जो पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1, explain the features of articulation of the following phonemes and moreover highlight the phonemes in diagrams. डायग्राम्स में भी आपने हाईलाइट करना है। एंड देन पार्ट बी आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द मिसिंग साउंड्स, मिसिंग साउंड्स के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पीच आर्टिकुलेटर्स यानी स्पीच ऑर्गन्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकुलेटर्स, लिप्स, वेलम, वोकल कॉर्ड्स। और पार्ट बी है इसका, राइट अ नोट ऑन एस्पायरेशन, क्लासिकल पोइट्री का है जी। क्वेश्चन 1 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, इफ दाउ फाइंड वन लेट मी नो, जॉन डन की जो पोइट्री आई थिंक उससे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जोसर्स कैरेक्टर्स अपीयर टू बी इंडिविजुअलाइज बट दे रिप्रेजेंट मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द स्टीरियो types of his age and time, and comment by substantiating from the text. और क्लासिकल पोइट्री का पेपर है, critically evaluate the poem for grounding the speaker, theme, tone, imagery and figurative language. Song, Go and Catching a Following Star by John Donne. And ये हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन 1 का पार्ट था, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, ये मिंगल अप हो गया। एंड देन शॉर्ट फिक्शन का पेपर है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेजेस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पार्ट ए, शी कैन टू नो द drudgery of housework, odious labor of kitchen, and she washed the dishes. अभी पूरा पढ़ने में तो टाइम लगेगा, आप आइडेंटिफाई कर ले कौन सी शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। इन पार्ट बी, आई लव द वेस्ट सेड द गर्ल irrelevantly, her eyes were shining softly, she looked away car window. And again because her father was slightly ill, जेम्स जॉयस की जो स्टोरी आई थिंक उससे लिए आए, एज फार एज आई रिमेंबर एवलिन से। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द एस्थेटिक मूवमेंट इन फिन डी सेशे इंग्लैंड इज interpreted by Oscar Wilde revolve around the ideal that the utility of one's action should be create the maximal amount of beauty and pleasure in one's life and nothing more. Discuss in the light of the story Nightingale and the Rose. So this is all.